हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JH टेक। और JH टेक की आज की इस वीडियो में हम लोग आगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न की तरफ क्रिएशनल जो है हम लोगों ने कवर कर लिए और अभी हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स में हमारे पास सबसे पहला है एडाप्टर पैटर्न। जाते हैं एडाप्टर पैटर्न की तरफ। एडाप्टर पैटर्न क्या है? एडाप्टर पैटर्न एक्चुअली इसका दूसरा जो नाम है इसको रैपर भी कहते हैं। सो रैपर इसको क्यों कहते हैं? Adapter is a structural design pattern that allows the objects with incompatible interfaces to collaborate. फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों जो हैं वो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं और ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोलैब करके, और ये जो है वो रन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप की जो कोलैबोरेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा आ गया? एडाप्टर डिज़ाइन पैटर्न है और ये किस में है? स्ट्रक्चरल पैटर्न का एक टाइप है। उसके बाद हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या आती है? Imagine that you are creating a stock market monitoring app. The app downloads the stock data from multiple sources in XML format and then displays a nice looking charts and diagram for the user. At some point, you decide to improve the app by integrating a smart third-party analytics library, but there is a catch. The analytics library only works with the data in JSON formats. ठीक है? You can't use the library as it is because it expects the data in the format that is incompatible with your app. You could change the library to work with XML, however, this might break some existing code that relies on the library, and worse, you might not have access to the library source code in the first place, making this approach impossible. तो अब इसका जो solution है, solution क्या है? Solution अब इसका ये है, you can create an adapter. This is a special object that converts the interface of the one object so that the another object can understand it. Adapter wraps the one of the object and hide the complexity and convergence happening behind the scenes. The wrapped objects isn't even aware of the adapter. For example, you can wrap an object that appears in meters and kilometers with the adapter that converts all the data in imperial units such as the feet and the miles. So adapter can not only convert the data into the various formats but can also help the objects with the different interfaces to collaborate. Here's how it works. ये वर्क कैसे करेगा? The adapter gets an interface compatible with one of the existence objects. Using this interface, the existence objects can safely call the adapter's method. Upon receiving call from the adapter, process request to send the objects but formats in order that the second object expects. Sometimes even it's possible to create a two-way adapter that can convert the calls in the both directions. So let's get back to our stock market app. To solve the dilemma of the incompatible formats, you can create an XML to JSON adapter for every class and the analytics library that your code works with directly. Then you just adjust your code to communicate with the library only via these adapters. When an adapter receives a call, it translates the incoming XML data into the JSON structure and passes the call to the appropriate methods of a wrapped analytics object. अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है? ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम एंड ट्रैवलिंग 10th टाइम, ट्रैवलिंग बाय पार्ट। तो
a suitcase before and after a broad trip, right? So when you travel from the US to Europe the first time, you may get a surprise when trying to charge your laptop. The power plug and the socket standards are different in the different countries. That's why your US plug won't fit in a German socket. The problem can be solved by using a power plug adapter that has the American style socket and the European style plug. उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो एडाप्टर ऑब्जेक्ट है, देन हमारे पास क्लास एडाप्टर है एंड देन सूडो कोड है हमारे पास। नेक्स्ट जो है इससे आगे हम देखेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।